Hello everyone. I hope you all are enjoying and like our videos and it will also help you for the learning. Before moving further, I am Payal. Welcome you on my YouTube channel that is KS Academy One Step to Success. You can join us also on Facebook page. Today we are going to study a new topic that is how to organism reproduced. In previous classes we have already studied about the DNA and RNA and chromosomes and how it will be the replicate. Let us overview on the DNA structure. This figure shows the DNA structure. So DNA is made up of two different strain and the strain is made up of sugar phosphate and they are interconnected with the four different bases. So that bases are indicated by the different color and that color, green color is called as adenine, pink color is called as guanine, yellow color is called as thymine and last one blue color is called as cytosine. So ये जो चारों डिफरेंट बेसिस है इससे डीएनए बना हुआ है और ये एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है. जो हमारे टू डिफरेंट स्ट्रेन है जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ में अटैच है बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. और हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि जो डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है या फिर पासिंग होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑस्प्रिंग में जो डीएनए पास होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए, राइट. तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने ये ऑलरेडी स्टडीड किया हुआ है कि डीएनए जो है हमारा पास होता है या फिर ट्रांसफर होता है हमारे पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग, अपने बेबीज के तरफ, राइट. तो फर्दर a basic occurrence is reproduction is the creation of the DNA copy. To produce the copy of DNA cell, use a chemical reaction. So DNA in the cell nucleus is actually the information source for creating the protein. इट मीन्स डैट कि जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, कॉपी बना रहा है खुद का एंड वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन से प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से वो ट्रांसफर हो रहा है. एंड ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली इट कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑस्प्रिंग एंड क्रिएटिंग द protein, right. Likewise, if the information is changed here, then the different protein will be created and this different protein will be eventually lead to the alternate body design. So DNA copy that generate would be the similar but many to be the not to be the identical और टू बी द ओरिजिनल. ये क्या होता है कि जब ये ट्रांसफर होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो इट विल कैरी द इंफॉर्मेशन और इट विल कैरी द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट. बट जब हमको नया ऑस्प्रिंग मिलता है, एक नई बॉडी मिलती है, तो इवेंचुअली ये क्रॉसिंग होने के बाद में क्या होता है कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में क्रॉसिंग होती है. सो जो हमको ऑस्प्रिंग ऑब्टेंड हुआ है तो ये आइडेंटिकल भी हो सकता है या तो ओरिजिनल जो है उसके जैसा एज एन एकदम सिमिलर भी हो सकता है. सो डिफरेंट भी आ सकता है उसमें और सिमिलर भी आ सकता है. Then and because of this variation the newborn cells are slightly different. और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जो न्यूबॉर्न सेल्स होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं. Further, the consistency of DNA copying during the reproduction process is significant for the maintenance of the body design and the features. जो DNA की copying हो रही है through the process of reproduction, तो ये significant maintenance रखती है body के structure and features को. It means that कि जो variations हमको मिले हैं from offspring से, हमको जो वेरिएशन मिल रहे हैं पेरेंटल जो हमारे है उनके साथ में वेरिएशन है बट कुछ सिमिलरिटीज भी है, राइट. तो ये एक डीएनए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी बॉडी में, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, सो एक तो मेंटेन करता है हमारे बॉडी डिजाइन को और फीचर्स को, ठीक है, थ्रू आउट द एज. हमारे थ्रू आउट द एज वो मेंटेन भी करता है बिकॉज वेरिएशंस जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एज के हिसाब से चेंज होते जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है या फिर रिप्रोडक्शन हुआ है, हम जो बेबी ऑस्प्रिंग्स आए हैं, एक तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर के पास से आएगी या तो हमारे मदर के पास से आएगी, या तो हो सकता है दोनों के पास की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो ये हो सकता है कि हमारी आंखें हमारे पापा जैसी हो, राइट. या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे जो लिप स्ट्रक्चर है, कानों का स्ट्रक्चर है, वो हमारे मदर जैसा हो. सो इट विल बी shows the variety of the DNA that cross each other and it will replicate and it reproduce
अवर सेल्फ, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया हमें, सो हम जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं डिफरेंटली और वेरिएशन शो कर रहे हैं. सो ये एक तो स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है, एक तो सिमिलर भी हो सकता है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. और डीएनए जो है ये कैरी करता है थ्रू आउट द लाइफ हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को और हमारे फीचर्स को. सो रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस ये वर्ड ही हमको मीनिंग दे रहा है कि फिर से प्रोड्यूस करना, एक पेरेंटल से न्यू ऑस्प्रिंग को बनाना. इट मीन्स डेट द रिप्रोड्यूस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, राइट. सो फर्दर द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया है टू इसमें. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स where only single parent is involved and no gamete formation takes place. asexual reproduction में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे, उसमें मल्टीपल पेरेंट्स या फिर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होगा, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसमें गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, इसमें गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बनेंगे. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में two parents are involved and gametes formation takes place. Meiosis is an important step in a sexual reproduction. So here in sexual reproduction में क्या होगा कि parental जो हो गए वो टू हो गए, इंडिविजुअल्स दोनों भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, टू डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व फॉर द रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑस्प्रिंग, राइट. देन further asexual reproduction is classified into 5 types. Fission, next one is budding, next one is regeneration, and after that vegetative propagation, and last one is spore formation. So इस तरीके से 5 क्लासिफिकेशन किया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. फर्दर स्लाइड में हम देखेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज फिजन, व्हाट इज बर्डिंग, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन. फर्दर sexual reproduction is classified into sexual reproduction in plants and sexual reproduction in animals. So sexual reproduction in plants is classified in two types. First one is in flower, by a flower. फ्लावर के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो कहलाएगा कि फ्लावर थ्रू रिप्रोडक्शन. सो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर. सो फर्दर पार्ट्स में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट. सो नेक्स्ट वन इज प्रोसेस बाय द सीड फॉर्मेशन. हम रिप्रोडक्शन जो है वो सीड फॉर्मेशन से किस तरीके से होगा, हमारा न्यू प्लांट सीड से कैसे बनेगा. सो इट विल बी द included in a sexual reproduction in a plant, right, and then sexual reproduction. Fission. This process takes place in unicellular organism and it is of 2 types, that is binary fusion and multiple fusion. So let us take the first example, binary fusion. In organism reproduced by the binary fusion only when adequate amount of food and moisture is available. In this the mother cell divided into 2 daughter cells, each containing a nucleus, amoeba, and divided by the binary fusion. So let us take the amoeba example. So in this picture we can see that the first mother cell and it will get divided into and it gets start to multiply or shrink. Then further it will divided into 2 parts. So first one is the parent amoeba, next one is the elongation of nucleus, next one is the division of nucleus and cytoplasm. In the third step we can see here the division actually takes place in a third step. Then finally 2 daughter cells are formed. In this way the binary fission occur in a amoeba. Next one is a multiple fission. So in unicellular organism reproduced by multiple fission when the conditions are unfavorable with no proper amount of food, moisture and temperature. In this case the organism form a cyst around itself. The nucleus divide and each daughter nuclei is surrounded by the membrane. When the conditions are unfavorable, the cyst dissolved and the daughter nuclei are released, which are later developed into the individual cell. Plasmodium and entomoeba undergoes this process. So in this picture we can see a single cell, right, surrounded by the membrane. जो ये cell है हमारा वो surrounded by the particular membrane and it will replicate around inside the membrane because it prepare itself a cyst.
वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है बिकॉज कंडीशन आर अनफेवरेबल. वो जो कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन के लिए वो अनफेवरेबल है. सो इनसाइड दैट न्यूक्लियस इट फॉर्म अ इनिशियली सिस्ट. एक सिस्ट बनाएगा जिसमें वो क्या करेगा, न्यूक्लियस का मल्टीप्लीकेशन करेगा. सो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में उसने मल्टीप्लाई किया, देन अगेन मल्टीप्लाई किया, देन सिस्ट जो है जब कंडीशन फेवरेबल हो गई देन सिस्ट जो है उसने उसको डिसॉल्व कर लिया एंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन. हर एक न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, कोटेड है, राइट. देन आफ्टर जब कंडीशन जो है फेवरेबल हो गई तब क्या होगा कि जो हमारे न्यूक्लियस है वो रिलीज हो जाएंगे और सिस्ट जो है वो खुद में ही डिसॉल्व हो जाएगा और जो डॉटर न्यूक्लियस है वो रिलीज हो जाएंगे. सो वी कैन सी हियर द न्यूक्लियस एंड फर्दर multiple division of the nucleus, and at last stage we can see the released, in this last step we can see the released nucleus, right. Here next one is in budding. So in this process on outgrowth is produced from the cell from which a new organism is developed. The developed organism remain attached to the parent organism and detach only when it mature, leaving behind the scar. This process is prominent in yeast and hydra. Let us take the example of hydra. So in this picture we can see the hydra plant inside the sea. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रा प्लांट है वो यहाँ पे किस तरीके से है. देन ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रा प्लांट का सराउंडेड बाय द टेंड्रिल्स एंड सेंटर ऑफ द हाइड्रा वी कैन सी हियर द माउथ लाइक स्ट्रक्चर, राइट. ये एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिखता है. देन आफ्टर दैट कि किस तरीके से इसमें बर्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो बर्ड जो फॉर्म होता है इसके आउटर सरफेस पे फॉर्म होता है. देन वी कैन सी हियर डायरेक्टली जो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है द आउटर सरफेस, एक साइड से आउटर सरफेस पे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सिमिलरली जो एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ आफ्टर दैट जो टेंड्रिल्स है पेरेंट्स के पास में उसी तरीके से यहाँ पे भी टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन हुआ. देन आफ्टर जब ये मैच्योर्ड हो गया, द मैच्योर्ड होने के बाद में क्या होगा कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा पेरेंट वन से एंड लिविंग बिहाइंड द स्कार, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर रख देगा एंड देन उसमें से ब्रेकआउट हो जाएगा एंड नेक्स्ट प्लेस पे वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेगा. सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ बर्डिंग इन अ हाइड्रा प्लांट. Vegetative propagation. So in this a new plant grow from the fragment of the parent plant or a specialized reproductive structure. The offspring are the exact clone of the original plant and there is no mixing of DNA. The common form of vegetative propagation are grafting, layering, cutting, tubers, tissues, culture, etc. So let us take the example of leaf, that particular leaf. इस leaf में हम देख सकते हैं कि जो growing of plant है या फिर external part जो है उसमें से grow कर रहा है leaves के ऊपर, right? ये किसी और different body पे नहीं हो रहा है but ये उसी leaves पे हो रहा है. Then हम उसको manually cut करेंगे, then उसको another place पे soil पे उसको grow करेंगे. So इसमें जो DNA है उसकी कोई mixing नहीं हो रही different plant के DNA के साथ में कोई mixing नहीं हो रही, वो individual plant के ही साथ का ही पार्ट है बिकॉज इन दैट कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, टू डिफरेंट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. सो यहाँ पे नो मिक्सिंग ऑफ डीएनए है और ऑस्प्रिंग जो है जो हमारा ऑस्प्रिंग प्लांट होगा वो एग्जैक्टली द क्लोन ऑफ ओरिजिनल वन, मतलब जो पेरेंट प्लांट होगा उसी की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, सिमिलर डीएनए शो करेगा, राइट. सो इन वेजिटेटिव प्लांट वी कैन सी द सिमिलर प्रॉपर्टी. और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ग्राफ्टिंग में यूज होता है, लेयरिंग में यूज होता है, देन कटिंग, ट्यूबुलर. हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे जैसे कि रोज का प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टेम से कट कर लेते हैं, देन उसी स्टेम को हम लोग दूसरे सॉइल में जाके ग्रो कर लेते, then the plant will grow easily. So it will grow their external parts like roots, like flowers, so it will easily grow, right. So we can say that the example is called as vegetative propagation. Next one is regeneration.
So in organism like Hydra and Ballerina, we had observed that they are cut into the several pieces. Each part grow into a new organism. It means that कि जब हम हाइड्रा को या प्लानेरिया को कट कर देते हैं, देन ऐसे कुछ सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट्स कि वो खुद से ही अदर बॉडी पार्ट में, इट मीन्स कि अगर हमने रूट उसमें से कट कर दिया तो इट विल अगेन रिफॉर्म देयर रूट, वो अपने रूट को फिर से बनाएगा. इफ हमने उसके ऊपर का अपर पार्ट जो है वो कट कर दिया तो इट कैन अगेन रिफॉर्म देयर अपर पार्ट, राइट. तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन. द स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, राइट. दिस cells are undergoes the change and form a different cells and tissues. The spectral process of these changes is known as development. हम उसे क्या कहते हैं? Development, or also known as a regeneration. Let us take the example of Pleuronina. So we can see in this picture directly कि ये जो है Pleuronina plant, so it will cut into 3 pieces. राइट, 3 पीसेस में हमने इसको कट किया एंड अगेन इट फॉर्म, इन्होंने क्या किया अपना फिर से वही पार्ट को क्या किया, फॉर्म किया. 2 डिफरेंट पीसेस ने अपना वही फॉर्म किया एंड रीजनरेट किया इट दैट ओरिजिनल बॉडी, सिमिलर टू दैट ओरिजिनल बॉडी इन्होंने अपना रीजनरेशन किया. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन, और ऑल्सो इट कॉल्ड एज पार्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें 2 डिफरेंट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है. सिंगल पेरेंट से इन्होंने 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का या 3 डिफरेंट ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया. दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन. Next one is spore formation. So during the spore formation, the organism form a knob-like structure called as sporangium. This happens during the unfavorable condition in an adequate supply of moisture and nutrient. When the conditions are favorable, they begin to grow, right? The sporangina contain spores that develop into the new individuals. The spores are covered by the thick walls that protect the spores until they comes into the contact with moisture and begin to grow. So in this picture we can see the example of sporangina. We can see here the knob-like structure, right? And in that knob-like structure a protective layer is there. कब तक के प्रोटेक्टिव लेयर है? जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशंस है. जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी, मॉइस्चर लाइक मॉइस्चर, सो वो क्या करेगी, लेयर ब्रेक हो जाएगी. देन द स्पोर्स आर कम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर एंड एयर एंड इट विल फॉर्म अ न्यू plant, or it will form a new sporangina that is called as a offspring of that particular parental sporangina. This process is called as a spore formation, जिससे spore formation से reproduction होना, right, new plant का formation होना, right. The next one is sexual reproduction. So sexual reproduction is a natural way of reproduction and takes place in all the multicellular organisms. This process involves 2 individuals to produce offspring. In this, the male and the female gametes fuse together and gives rise to the new cell. So before moving that, we know that the different organisms reproduce in different ways. So let us have a detailed look on how different organisms reproduce. So in previous we have already studied about the asexual reproduction. So further we are going to study about the sexual reproduction in plant and also sexual reproduction in a animal. So what is sexual reproduction in a plant? The angiosperm have both the male and female reproductive organ. The pollen grain produce male gametes which fuse with the egg cell of the female. Right? The formation of gamete is known as a gametogenesis. The pollen grain are transferred from another to stigmata to form a flower. This pollen travel through the style and reach the female gametes present in the ovule. The 2 gametes fuse together and this process is known as a fertilization. A zygote is formed which get converted into the embryo. This gives the rise to a new seed which gradually turn into the fruit. Right? So in plant what will happen? Actually what will happen? जो pollen grains रेडी होते हैं, फॉर्मेशन होता है फ्लावर्स में. जब फ्लावर का ग्रो होता है वहां पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. दैट प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स को. देन वो फ्यूज होते हैं किसके साथ में? फीमेल गैमेट्स के साथ में या फिर फीमेल एक सेल के साथ में. देन जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स या तो इंडिविजुअली एक बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या तो फिर
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिसमें बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें इंडिविजुअली जो मेल गैमेट्स होंगे फीमेल गैमेट्स होंगे वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, बट इन बाइसेक्सुअल द फीमेल गैमेट्स कैरिंग different flower and male gametes carrying different flower. So further in further parts we are going to study a detailed study about the sexual reproduction in a plants or sexual reproduction in a plant by flower or by seed. So in this slide we just overview on the sexual reproduction in a plant. So जब seed formation होगा then the जब दोनों का क्रॉसिंग होगा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, देन द पोलन ग्रेन गेट ट्रांसफर इनटू द अनदर स्टिग्मेटा ऑफ द फ्लावर, जो स्टिग्मेटा ऑफ फ्लावर है उसमें से वो ट्रांसफर होगा, देन गैमेट्स का जो है फॉर्मेशन होगा, जो फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होगा, ओवल में, राइट, दोनों का क्रॉसिंग होगा, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ऑफ बोथ द गैमेट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो सेल का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट, and then zygote is converted into the embryo में कन्वर्ट होने के बाद में सीड लाइक स्ट्रक्चर या न्यू सीड का फॉर्मेशन होगा, और वो सीड क्या कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर ईटिंग फ्रूट, जो हम फ्रूट्स खा जाते हैं, मैंगोज खा जाते हैं, उसके अंदर जो सीड्स होती है, जैसे एप्पल्स की सीड होती है, ग्रेप्स की सीड होती है, तो जो सीड फॉर्मेशन होगी देन सीड से हम लोग अगेन उसको ग्रो करके हम न्यू प्लांट का ग्रो करते, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट. Sexual reproduction in human. So the testes in a male and ovaries in a female are responsible for the production of sperm in a male and egg in a female. Right? The sperm fuse with the egg during the fertilization, which result in the formation of zygote, and then get implicate in the wall of the uterus, and it further divides and form a new embryo. The embryo start developing week by week, seeking nutrition from the mother with the help of the placenta. A new individual finally form after the period of 9 months. In sexual reproduction in human, होता क्या है कि जो टेस्टिस होती है मेल में, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो कैरी करता है XY chromosomes, right? Then in female the ovary is responsible for the egg formation, and females only have a single chromosome, that is XX chromosome, right? Then the sperm get fertilized with the female eggs, फीमेल एग के साथ में स्पर्म का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, which result formation of zygote. Here also formation of zygote is there. Then zygote का formation होने के बाद में that will be get into the implicate with the wall of uterus. ये uterus के अंदर में present होगा. Then वहां पे क्या होगा, week by week क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, zygote then converted into the embryo, and जैसे जैसे डेज गोज ऑन होते जाएंगे वो एम्ब्रियो का ग्रो होते जाएगा विद सीकिंग ऑफ न्यूट्रिशन. सीकिंग ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि वो न्यूट्रिशन किससे लेगा, मदर से न्यूट्रिशन लेगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, एंड विद द पीरियड ऑफ 9 months and 9 days, 9 months और 9 days के बाद में कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, देन बेबी गेट डिलीवर्ड फ्रॉम द मदर वन. की पॉइंट ऑन द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. Reproduction is the process of producing a new individual of the same kind. Organisms reproduce in two ways, asexual and sexually. Then asexual reproduction does not involve the fusion of male and female gametes. This takes place in a bacteria, amoeba and hydra. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes and can be seen in the human and many animals. Fission, budding, vegetative propagation, fragmentation are the some of the different types of asexual reproduction. It does not require any reproductive organ. Sexual reproduction involves the reproductive organ of male and female. So let us overview or let us study about the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. So asexual reproduction, a single individual gives rise to new individual. Gametes are not formed. New individual is identical to the parent. It is extremely useful as mean of the rapid multiplication adopted by the lower organisms. Two individuals involved in a sexual reproduction, that is one male and one female, are needed to give rise to the new individual. Gametes are formed in a sexual reproduction. New individual is
genetically similar but not identical to the parent, but its genes are similar to the parental one, as well as in mother as well as in father. It is useful to generate more variation in the species. So adapted by the higher organisms. So these are the difference between the asexual reproduction and sexual reproduction. In further chapter or further parts, we are going to study detailed study on sexual reproduction and reproductive system in male and female. Organisms have an ability to continue the chain of life by reproduce the new ones, to pass on its genes which are acquired over the millennia. Reproduction is essentially a process by which individual produce a new individual of the same kind, and the process is very important for the existence of life on earth. Here we completed part 1, how to organism reproduce, in which we have studied about the asexual reproduction in details. If you have any queries and suggestions, so you can comment on my comment box. If you like my video, so do not forget like and share and subscribe my channel, that is KS Academy One Step to Success. Bye bye.